नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सरसाइज टीम। मैं हूं देवम एंड अगेन योर मोस्ट वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर व्हिच इज फ्रॉम 24th टू 31st ऑफ अक्टूबर 2022। सो टेबल ऑफ कंटेंट एज ऑलवेज आपके सामने है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट फ्रॉम डिफेंस सेक्शन। अग्नि प्राइम बसाल्टिक मिसाइल, ये हमारा आज का पहला करंट अफेयर होगा। सेकंड जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक से इंडिया टू एक्सपैंड नेविक। फिर थर्ड वाला इंपॉर्टेंट न्यूज सेक्शन और कहूं या फिर कहूं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। टू इंडियन बीचेस रिसीव्स ब्लू फ्लैग टैग। नाउ व्हाट इज ब्लू फ्लैग टैग और ये किन टू बीचेस को मिला है? तो एक मोटा मोटा अगर अभी कहूं तो लक्षद्वीप में दो बीचेस हैं जिनको ये मिला है। एंड ब्लू फ्लैग टैग क्या होता है क्या नहीं, ये हम और ब्रीफ में जब करंट अफेयर आएगा तब हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, चाइना इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन। एक्चुअली चाइना ने इनहेलेबल मतलब कि जो इनहेल कर सके इस प्रकार का कोविड का वैक्सीन डेवलप किया है। इसको भी हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। ये वन लाइनर टाइप का है कि हु इन्वेंटेड रिसेंटली इनहेलेबल kind of COVID-19 vaccine. So you can option will be China and etc etc. So you can mark China like that. Now after that from defense section, वडोदरा IS ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एक्चुअली फर्स्ट है ये, फर्स्ट ऐड करना रह गया होगा बट दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड एज यू ऑलवेज नो व्हेनेवर देयर इज अ फर्स्ट इन एनी करंट अफेयर देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। After that, I'm sure you would love this current affair because it's from sports, your favorite. BCCI to offer equal pay to men and women cricketer. बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि अब से वो मेल और फीमेल दोनों ही क्रिकेटर्स को इक्वल अमाउंट ऑफ सैलरी देगी। मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया बिकेम सेकंड आफ्टर न्यूजीलैंड टू टेक दिस स्टेप। ठीक है, ये स्टेप इंडिया ने दूसरे पायदान पे लिया है। सबसे पहले ये न्यूजीलैंड ऑलरेडी कर चुका है, वहां के मेल एंड फीमेल क्रिकेटर्स ऑलरेडी इक्वल पे पे चल रहे हैं। आफ्टर दैट फ्रॉम पॉलिटी, अमेंडमेंट्स इन आईटी रूल्स 2021। ठीक है, ये 2021 में था, अभी तक क्यों है, क्यों हम आज के करंट अफेयर में इसको पढ़ेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे और ब्रीफ में व्हेन वी विल हैव दैट करंट अफेयर। आफ्टर दैट फ्रॉम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, टाइंगोंग स्पेस स्टेशंस मॉड्यूल लॉन्च्ड। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम साइंस एंड टेक एज ऑलवेज। बट ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये चाइना रिलेटेड है, चाइनीज रिलेटेड है, सो इसको हम ढंग से और बेहतरीन तरीके से ब्रीफ में करेंगे। And the last current affair for the day would be from GS paper 2 international relations. Sixth Indian EU HLDMN मतलब कि यूरोपियन यूनियन के साथ मीटिंग इंडिया की जो हाल ही में हुई थी यानी अक्टूबर मंथ में, जिसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, इससे रिलेटेड शॉर्ट है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, एग्जैक्ट आईएस पे ही अवेलेबल है। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा सकूं टीम से कह के। बट सो दिस इज all the current affairs which we gonna study today. So without wasting our any time, let's start from the very first current affairs, which is from GS paper. You can say 3 from security and disaster management if you want, but this is from defense. Okay, for more convenience, let me write. Don't go on my handwriting. Agni Prime Basaltic Missile. Defense Research and Development Organization DRDO successfully test-fired indigenously developed new generation medium range basaltic missile Agni Prime या फिर अग्नि पी फ्रॉम द एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। कहाँ है ये आइलैंड? तो ओडिशा कोस्ट पर है। कोशिश करिएगा इसको मार्क करने की, है ना, जहां पर भी ऐसा होता है इस एम लिख लीजिए करिए, अपने नोट्स हो या कहीं पे भी हो। ठीक है, सो एज ऑलवेज की पॉइंट्स, very first, very important. So it is the third consecutive test flight of the Agni Prime missile. मतलब कौन सा है? थर्ड है। ओके, पहले दो हो चुके हैं। Marks the completion of development trial. It confirmed the accuracy and reliability of the indigenous missile system. Okay, the first flight test of Agni Prime was conducted in June 2021. Okay, with the second one taking place 6 months later in December. After users trials by Strategic Nuclear Command will be officially inducted into the Strategic Forces Command arsenal and will become a key asset in India's nuclear deterrence. Okay, easy. Datas को याद रखिएगा as always, मैं हमेशा कहता हूँ datas are important, so याद रखिएगा। Agni Prime Missile, now this is important.
यही करंट अफेयर का मेन सार है, यही आत्मा है। ये अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो अग्नि पी यानी अग्नि प्राइम is a new generation advanced variant of the Agni class of missiles. It is the sixth missile in the Agni series of basaltic missile. Okay, it is a two-staged canisterized missile. ठीक है, टू स्टेज मतलब दो हिस्सों में है ये, फर्स्ट स्टेप एंड दूसरा। ये इस तरीके से दो डब्बे हैं इसके, एक ये डब्बा वन एंड एक दूसरा ये। Okay, now this 10-meter long two-stage canisterized missile has a maximum range of 2000 kilometers, which is really long. 2000 kilometers. Very nice. Moving on, it is equipped with new guidance. Okay, equipped with new guidance and propulsion systems. The missile can be fired from mobile launchers. Okay, this is important, your data. And has high survival rate. मतलब कि हाई सर्वाइवल रेट क्या होता है, कई बार कोई मिसाइल है, ठीक है, ये आपकी मिसाइल हो गई मान लो, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाया करो आप लोग, फिर बाद में बोलते हो ड्राइंग बेकार बना रहे हो सर। ऐसी मिसाइल है, अब कई बार जब इसको लॉन्च करते हैं तो यहीं फट जाता है, बट या फिर कहूँ जहां पर जाके इसको अपना काम करना था, ये वहां के पहले ही कहीं बीच रास्ते में फट जाती। ऐसे कई सारे मिसाइल्स हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे मिसाइल्स होते हैं, इवन आफ्टर टेस्टिंग, इवन व्हेन द एक्चुअल यूजेज इज गोइंग ऑन एट दैट टाइम दिस शूट, बट इसमें हाई सर्वाइवल रेट है। अदर अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स आपके सामने है, आप एक बार खुद से इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, आवर नेक्स्ट करंट अफेयर फॉर द डे व्हिच इज फ्रॉम जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। ओके, NAVIC, India plans to expand regional satellite navigation system. Okay, NAVIC मतलब navigation system, regional satellite navigation system. ठीक है, अब ये क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आएगा आगे। सो की पॉइंट्स, for this purpose ISRO is to launch 12 additional satellites into medium earth orbit MEO, यानी medium earth orbit. For this purpose placing NAVIC satellites in MEO will make them global like GPS. Okay, currently NAVIC satellites are either in geostationary or geosynchronous GEO orbit 36,000 kilometer from Earth. Okay, now what's the reason? इसके पीछे का कारण, several of the satellites in the current NAVIC constellation are not operational. That's why. Okay, one line में आंसर इसका ये है। So ISRO is planning to replace at least 5 of these existing satellites with L1, L5 and S band, which will provide improved global positioning services. The NAVIC satellites are currently operating in L5 band and S band. L5 band ये भी डेटा है, हाँ ये सब डेटाज है, इसको साइड में या फिर कहीं अपने पेज पे लिख लीजिए अगर ये डेटाज हैं, which are used only for transportation and aviation sectors. The inclusion of L1 band in the new satellite would help NAVIC become easily accessible to civilians. The improved version will provide long codes so that communications are not breached while being used for the strategic and security purposes. Okay, मेजर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो चीज बिल्कुल लास्ट में लिखी गई है, सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का, देखिए ये जो करंट अफेयर है शुरुआत में जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दिस इज ऑल बेस्ड फैक्चुअल, है ना, इसमें कंसेप्चुअली समझने लायक नहीं है, ये करंट अफेयर इज फॉर योर प्रीलिम्स, इसलिए इनके डेटास को याद रखिएगा, विच इज वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इन डेप्थ, क्योंकि जो करंट अफेयर का लेना देना आपके मेंस से भी थोड़ा बहुत होता है ना, जैसे कि इनका भी है, बट जहां पर बहुत ज्यादा होता है उनको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत ज्यादा है। इस वक्त अगर मैं वो चीजें ये हर किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ाऊंगा बताऊंगा तो इसमें आपका टाइम वेस्ट है, मैं तो बता दूंगा मुझे कुछ नहीं है, वेरी इजी टॉपिक्स, ठीक है, बट इट विल टेक टाइम, मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में लगता है यार आप समझा नहीं रहे हो ज्यादा, बिकॉज दिस आर ऑल फैक्चुअल थिंग्स, ये डेटाज हैं, ये डेटाज में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जब जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की संभावना होती है मैं कहता हूं कि यार इसमें से इनडायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और फिर मैं उसको ठीक से समझाता भी हूं, दिस आर ऑल फैक्चुअल थिंग्स। ओके, मूविंग ऑन, नेविक, नेविक एंड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, है ना,
is a constellation of 7 satellites that can be used to track location. बिल्कुल स्वाभाविक है. An independent standalone navigation satellite system developed by ISRO is designed with a constellation of 7 satellites and a network of ground stations operating 24/7. The first of these satellites, IRNSS-1A, were launched in 2013 and the latest in 2018. देखिए, now this is all data. What is this? Data. What is this? Data. So remember these things. Okay. मतलब एक बार आपने पढ़ लिया ना, डेटा में क्या बोलता, रटना नहीं है. एक बार आपने ध्यान से पढ़ लिया कि ओके, द फर्स्ट ऑफ द सैटेलाइट्स वेयर लॉन्च इन 2013 एंड द लेटेस्ट 2018. नाउ दिस इज डेटा. आपने देख लिया. नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स इन प्रीलिम्स, दिस क्वेश्चन और 1 2 3 4, सपोज ये आपके ऑप्शन है ना, 1 2 3 4 ये आपके मान लीजिए ऑप्शन है. सो ऐसे में क्या होगा, आपने एक बार पढ़ लिया, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन यही चीज ऐसी की ऐसी अगर आपके ऑप्शंस में लिखी आ गई, सो यू विल बी लाइक श्योर कि हाँ ये पढ़ा हुआ है, एंड देन यू विल टिक देम. ठीक है, ऐसे होता है. आप अगर हर चीज पढ़ने जाओगे तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग इन सच अ शॉर्ट स्पेन कि आप हर चीज रट लो, हर चीज दिमाग में रख लो. ऐसा नहीं होता. आपके दिमाग में कहीं ना कहीं अपने आप चीज पहुंच जाती है जब आप क्वेश्चन पेपर, इसीलिए टेस्ट सीरीज का कहा जाता है. हमारे एग्जैक्ट टेस्ट में भी काफी चल रहा है टेस्ट सीरीज. यू कैन ज्वाइन एट अ वेरी मिनिमलिस्टिक प्राइस. ओके, 2999, जिसमें हम प्रीलिम्स रिलेटेड सारी चीजें, टेस्ट सीरीज और डेली टारगेट्स दे रहे हैं और डेली एमसीक्यू सॉल्व्स भी. सो एडवर्टीजमेंट हो गया मेरा, मैं आगे बढ़ता हूँ. It became operational in 2018, though missing the completion timeline of late 2011. ओके, ये सब डेटाज हैं. मैं फिर से कहूंगा, इनको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए. ये पूरा का पूरा पीपीटी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा. जल्दी मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा. मैं जानता हूं मैं काफी टाइम से आपको बार बार वेबसाइट के बारे में कह रहा हूं, बट इट इज ऑन बिल्कुल फाइनल स्टेज एंड जल्दी वो लॉन्च हो जाएगी. It is currently being used for public vehicle tracking, providing emergency warnings, alerts for fishermen sailing to deep sea, and tracking information related to natural disasters. ओके, हम देखते हैं ना कई बार साइक्लोन्स वगैरह का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टाइप दिखता है, हमको बताते हैं कुछ ऑरेंजी ऑरेंजी एंड साइड में येलोइश कलर, है ना, उस टाइप से. With NAVIC, India is one of the few countries having its own positioning system. Others with their own satellite system are Rus, yani Russia, the European Union, China. Okay, moving on. It was reorganized by the International Maritime Organization (IMO) as a part of Worldwide Radio Navigation System for operation in Indian Ocean region in 2020. Okay, again data. Okay, so remember these things. Now this is important. Blue flag tag, this is something new. I'm sure आपने कहीं ना कहीं सुना है या नहीं सुना है, लेकिन ये आपके लिए न्यू होगा. ठीक है. So this is from an like important current affair. इसको environment section से भी अपन देख सकते हैं, like GS paper 3. So 2 beaches in Lakshadweep received international eco label blue flag. What is this blue flag? Again and again coming. Let's get brief into it and let's know what it is. So, key points. Minikoy, Thundi Beach and Kadmat Beach in Lakshadweep recently entered into the coveted list of blue beaches. These 2 beaches have dedicated staff to maintain cleanliness and provide safety and security for swimmers. Again, what it is? Data. With these new entrants, India currently has 12 beaches with blue flag certification. Now again, what it is? Data. Golden Beach in Puri was the first in Asia to receive blue flag certificate. Now what it is again? Data. Okay. Moving on. अदर बीचेस, कौन कौन से और बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग मिला है? सो ये सारे हैं, आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं. मूविंग ऑन. व्हाट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जरूर हम समझेंगे. इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है ना, accorded on the basis of 33 stringent criteria in 4 major heads, which are environmental education and information, bathing water quality, environmental management and conservation, and safety and services in the beaches. Okay, remember this point. Now, it is an eco-tourism model endeavoring to provide the tourist beachgoers clean and hygienic bathing water facilities,
a safe and healthy environment and sustainable development of the area. ये भी at the end क्या है? Data. Moving on. Now, what is history behind this blue flag? So, the blue flag certification program was started in France. What it is? Data. In 1985, what it is? Data. In areas, I know आपको irritation हो रही होगी, बट सेम फीलिंग मुझे आती है जब कई बार चीजें आप समझ नहीं पाते कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ना, क्वालिटी चीजों को पढ़ना is the key of UPSC. You don't have to study each and everything in UPSC. Okay? Quality thing, quality study material, quality test series, quality coaching, and quality videos. This will improve your strategy. This will improve your path of UPSC. Okay? Moving on. In areas out of Europe in 2011. Again, data. The certification is awarded by Denmark-based non-profit foundation for environmental education. It conducts regular monitoring and audits for strict compliance with the 33 criteria at all times. Okay, all times. The blue flag certification is seen as the indicator for high environmental and quality standards of beaches, marinas, and sustainable boating tourism. Okay, moving on. It is accorded by the international jury composed of eminent members, United Nations Environment Program, United Nations World Tourism Organization, Denmark-based NGO Foundation for Environmental Education, and International Union for Conservation of Nature. On the lines of blue flag certification, India has also launched its own eco-label BEAMS, यानी कि Beach Environment and Aesthetics Management Services. ठीक है, बीम्स क्या है? ये खुद का निकाला है. जैसे कि ब्लू फ्लैग जो है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कहाँ से है? तो फ्रांस से निकला हुआ था, लेकिन इंडिया ने खुद का भी लॉन्च करा, ओन इको लेबल बीम्स, बीच एनवायरमेंट एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज. ओके, सो दिस वाज द your Indian beach blue flag tag. Okay, now foundation भी रह गया इसका. So foundation for environmental education. So the foundation for environmental education is non-governmental organization based in Denmark. Okay, ये आप इसको pause करके and you can study on your own. This is like an extra. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा है फॉर योर मोर नॉलेज, बट जितना इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता चुका हूँ. नॉट इट इज टू मोर देन सफिशिएंट. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ये एक वन लाइनर टाइप है, बट इसमें हम थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. इनहेलेबल कोविड-19 वैक्सीन, ये वर्ल्ड अफेयर से है. ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं वर्ल्ड अफेयर से, इंटरेस्टिंग भी होता है पढ़ने में. चाइना हैव रोल्ड आउट एन इनहेलेबल वैक्सीन एज यू कैन सी हियर, है ना, COVID-19 as a booster dose for previously vaccinated people. This is important. It is a booster dose, okay, not directly to be used. First आपको तो लगना ही है इंजेक्शन. ठीक है, सुई तो पहले लगेगी. Moving on, let's get brief into it. So about inhalable COVID-19 vaccine. So the Chinese biopharmaceutical company CanSino Biologics developed the inhalable COVID-19 vaccine. ये भी डेटा है. किसने करा डेवलप? ये आपके CanSino, remember the name, as an aerosol version of the company's one-shot adenovirus vaccine. Okay, the clinical trials for the vaccine were conducted in China, Hungary, Pakistan, okay, always, Malaysia, Argentina, and Mexico. It is the mist that needs to be stuck to the mouth. Okay, as you have seen before in the picture. अगर मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाने की. After slowly inhaling, the receiver is required to hold his breath for 5 seconds. The entire procedure lasts for 20 seconds. Okay, this was the process. And data is. Other COVID-19 vaccines are needle flea. कौन कौन से? तो Incovac, developed in US and licensed by Hyderabad based Bharat Biotech, is the first intrational COVID-19 vaccine approved by the Drug Controller General of India for emergency use. It uses modified chimpanzee adenovirus. Okay, data again. क्यों इस ये डेटा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि first remember this thing. It can provide immunity against COVID-19 and reduce transmission of viral pathogen. This vaccine is not yet part of India's national immunization program. Okay, but this is for emergency use. कभी भी emergency आ जाए for that. Now, Zycovid. Okay,
developed by Zydus Cadila, is an intradermal vaccine, यानी skin via skin, administered via skin using a needle-free system. It is first COVID-19 vaccine to build on DNA platform. Okay, again first, but on what scale? तो COVID-19 vaccine built on DNA platform, उस basis पे ये first है. Now significance of needle free vaccines, क्यों क्या मतलब इसकी आवश्यकता है? So जैसा कि कई लोगों को डर लगता है needle से, इंजेक्शन से, उनके लिए नॉट लाइक दैट, ये भी एक कारण हो सकता है, फियर ऑफ निडल्स, बट मोर देन दैट दे मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑन द ट्रेन्ड पर्सनल. देखिए इंजेक्शन चाहे जहां नहीं लगाया जा सकता है आपकी बॉडी में, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है ना, लाइक हड्डी पे नहीं लगाना है, वो तो मस्कुलर एरिया में लगाना है, कौन से मस्कुलर एरिया में लगाना है, कहाँ लगाना है, ये एक ट्रेन्ड व्यक्ति कर सकता है. लेकिन जो निडल फ्री वैक्सीन होती है उसमें ट्रेन्ड व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है. अब जैसे यही वाला इनहेलेबल है, तो all you have to give the person the inhalable vaccine and he have to consume it. And if you talk about this Zycovid, then it is a kind of goes via skin, so you have to keep that particular drug on the skin and it will inhale it automatically, it will absorb by the skin. So इसमें ज्यादा trained persons की जरूरत नहीं है. इसी से इंटरलेटेड ये सेकंड पॉइंट है, दिस मेक्स मास इम्यूनाइजेशन मोर इकोलॉजिकल फॉर पुअरर कंट्रीज एंड कंट्रीज विद इनसफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, पुअर कंट्री में क्या भैया इतने ट्रेन पर्सन्स नहीं ला सकते हैं, इतने लोगों को नहीं लाया जा सकता है कि सब इंजेक्शन वाले आए, सही इंजेक्शन लगाए विद ट्रेन्ड पीपल, तो वहां पर इनसफिशिएंट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है होने की वजह से ये इजीली यूजेबल है, कोई भी यूज कर सकता है इजीली, है ना, जो कि निडल फ्री वैक्सीन. ओके, मूविंग ऑन. Now, this is our next current affair from defense section. Vadodara IAF, okay, transport aircraft manufacturing facility. The Prime Minister of India, Narendra Modi ji, laid the foundation stone for the C295 Transport Aircraft Manufacturing Facility in Vadodara, Gujarat. C295 Transport Aircraft Manufacturing Facility, let's know something about it. It is the first project of its kind. You know why it is important? In which now a military aircraft will be manufactured in India by a private company, not by any government. Okay, it is also the first time that the C295 aircraft will be manufactured outside of the Europe. This project is jointly implemented by European aviation major Airbus and Tata Advanced System, the defense arm of the Tata Group. This is huge step forward for India in the global aircraft manufacturing domain. Okay, now the deal with Airbus for C295 medium transport aircraft, the Defense Ministry of India signed a contract with the defense company Spain-based Airbus Defense and Space for the acquisition of the aircraft with the associated equipments. As part of this contract, 16 aircraft will be delivered in fly-away condition and 40 will be manufactured by an Indian aircraft contractor, the Tata Consortium led by TASL. Okay, moving on. Now features, let's know about its features of C295 aircraft. It is a transport aircraft with 5 to 10 ton capacity and a maximum speed of 480 km per hour. It has a rear ramp door for quick reaction and para dropping of troops and cargo, short takeoff and landing from semi-prepared surfaces and some other features. It has the longest unobstructed cabin in its class, which can accommodate 71 seats. All aircrafts will be fitted with an indigenous electronic warfare suit to be developed by Bharat Electronics Limited and Bharat Dynamics Limited. Okay, any किस्म का doubt, you are it's welcome. आप भेजिए किसी भी तरीके का डाउट किसी भी जगह पे. Okay, I will take care of it. Okay. Now, this current affairs is from sports, as you can see. वो भी आपका favorite sport, cricket. Okay, so BCCI announced pay part. Now, Board of Control for Cricket in India, BCCI announced a pay equity policy, saying that its centrally contracted men and women player would get same match fees. Okay, देखिए आने को क्वेश्चन इसमें से भी आ सकता है, मैं बताता हूँ क्यों. यूपीएससी प्लेस विथ माइंड. जहां आप सोचेंगे कि यार यहां से तो आ ही नहीं सकता, वहां से तो जरूर ही आएगा. ठीक है, यानी यूपीएससी के ऊपर वो डायलॉग बहुत अच्छे से फिट होता है, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता हूं वो तो मैं डेफिनेटली करता हूं. ओके, सो अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप से नहीं आ सकते तो यू आर रॉन्ग, इट कुड कम. ओके, रिमेंबर.
सो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए. सो की पॉइंट्स इसके जान लेते हैं. तो द स्टेप एंड इज अ सिग्निफिकेंट मूव टुवर्ड्स ब्रिंगिंग जेंडर पे पार्टी पैरिटी या पार्टी कई जगह बोला जाता है. As according to Global Gender Gap Index 2022, at the current rate of progress, it will take 132 years to reach full parity. This will ensure that the same pay is provided for both men and women cricketers without any kind of discrimination. India has become only the second country in international cricket to implement equal pay after New Zealand. और न्यूजीलैंड ने भी कब करा था? इन जुलाई 2022, यानी कि हमसे कुछ महीने ही पहले. विच इज अ नाइस स्टेप बेसिकली. व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? मुझे जरूर बताइएगा. Now, gender pay gap. So, gender pay gap refers to difference in earnings between women and men in the paid employment and the labor market. It is a measure of the gap in the overall earning of men and women. It is calculated by considering several parameters applied to the total number of employed members of both genders. This means that it does not account for women who have voluntarily stayed out of the workforce or have taken sabbatical. ठीक है, इसमें भी काफी डेटा है. Now, next current affair for the day, amendments in IT rules. Obviously, this is from Polity from GS paper 2. Okay. Government notified amendments to the Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021. Okay, let's get brief into it. So, key amendments, yeah, फिर कहूँ key points on amendments to ID Rules 2021. The amendments impose a legal obligation on intermediaries to take responsible efforts to prevent users from uploading certain categories of harmful, unlawful contents. Will ensure that the intermediary's obligation is not mere formality. Okay, pave the way for the establishment of one of the more grievance appellate committees, GACs या GSEs, to allow user to appeal against the inaction of all decisions taken by intermediaries on user complaints. Okay, now the grounds in subclause 1 of rule 3 have been rationalized by removing the words defamatory and libelous. ठीक है, इनको हटा दिया गया. Whether any content is defamatory or libelous will be determined through judicial review, which is a good step basically. ऐसा मुझे लगता है. आपके भी थॉट्स बताइएगा. Some of the content categories in subclause 1 of rule 3 have been rephrased to deal particularly with misinformation and content that could incite violence between different religious caste groups. Okay, simple है. Moving on to our next current affair of the day from GS paper 3, Science and Tech. Okay, Tiangong Space Station's final module. Now, what is this? Let's get brief into it. As always, Mangatian, the final module of Tiangong Space Station, was successfully launched on October 31st. Let's get brief into it. Mangatian module, the third and final module, Tiangong Space Station, was launched abroad along March 5B Y4 carrier rocket from Wenchang Launch Center in China. Now what it is, again डेटा है बहुत सारा इसमें, इसलिए इसको ठीक से एक बार पढ़िएगा. It is an important component of Chinese space station equipped with numerous cutting edge scientific equipment. Okay, it will provide pressurized environment required for conducting scientific experiments in free fall or zero gravity, which could not be undertaken on Earth for more than few minutes. Okay, remember this thing. Now, what are its features? तो feature में सबसे पहले it is the second of two modules that will host science labs required for conducting research. Okay, once docked on the core module, Tianhe will complete the T-shaped structure, यानी ऐसा, okay, of the space station along with other module Mangtian, which was launched in July 2022. Mangtian will have workstations supporting experiments related to microgravity, scientific studies and frontier scientific projects focusing on fluid physics, combustion and material science and space technologies. Now here याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक हमेशा जैसा बताता हूँ. पिछले करंट अफेयर में स्पोर्ट्स सेक्शन से जो हमने देखा था कि भैया
विमेन एंड मेन जो मैन है उनकी इक्वल पे कर दिए, तो हम सेकंड नंबर पे बने हैं, इंडिया सेकंड नंबर पे। और फर्स्ट पे कौन था? तो न्यूजीलैंड था। और न्यूजीलैंड ने कब करा था? सो जुलाई में करा था, जून जुलाई में, और अक्टूबर में हमने किया। सेम यहाँ पर जुलाई में पहले हुआ है ना। खैर इंडिया और चाइना का रिलेशन नहीं है, बट याद रखने के लिए कि कैसे इंटर रिलेटेड है, एक छोटा सा आपको याद रहे चीजें, इसलिए बता रहा हूँ। आई नो इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताइए, बट मे बी इट कुड हेल्प, गॉड नो। Now, Taingong Space Station. Let's know something about it. The Taingong Space Station is currently being constructed by China and operated by China Manned Space Agency in the low Earth orbit. It has a core module named Tianhe Harmony of Heavens, इसका मतलब है, and two laboratory cabin modules, Waitin Quest for Heavens and Manhattan. Now note, it is a notable thing. Beijing has been heavily invested in its space programs. Why? To compete with US and Russia. Russia also involved here. China was banned from ISS since the year 2011 after the US refused to let NASA to work with China. Okay, moving on. So this is our last current affair of the day. इसके ऊपर एक इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट भी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, बार बार कह रहा हूँ। आई विल ट्राई कि उसका कुछ क्लिप अगर हो सके तो यहाँ ऐड करवा सकूँ, एंड इफ नॉट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हो, आप देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आएगा। बट राइट नाउ यहाँ भी समझ लेते हैं। The sixth high-level dialogue on migration and mobility between India and European Union. Okay, this is from GS paper 2 international relations. Okay, so now sixth India EU HLDMM है ना, was held in Brussels in October 27, 2022, focused on wide range of topics related to promotion of safe, orderly, regular migration and prevention of irregular migration also. Both sides expressed satisfaction of successful implementation of the Indian EU and European Union Common Agenda on Migration and Mobility, focused on potential areas of cooperation to facilitate and ease the mobility and migration of talented professional students and the skilled workers for the mutual benefits of European Union and India. Okay, now India and European Union Common Agenda on Migration and Mobility, India UCAMM, it was established during the 13th, remember, 13th India EU Summit that was held in 2016. It is a framework for the cooperation between India and the European Union on the areas of related to migration. It provides joint objectives, recommendations, and actions that need to be undertaken to strengthen legal aspect of migration, prevent and combat irregular migration, and address human trafficking issues. Okay, सही है, अच्छा है. So this was our current affairs. We'll see you on the next day, or maybe next to next day, in the very next video and new video for the current affairs. Till then, all the very best, keep studying and work hard for your prelims. It's very near. और आप हमसे कांटेक्ट कहीं भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, इवन ट्विटर पे भी, कहीं पे भी, फेसबुक पे भी, इफ यू वांट यू कैन कनेक्ट होते हैं। टेलीग्राम पे एंड व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली अपडेट्स मिलते हैं, मंथली मैगजीन्स मिलती हैं, तो उसको चेक करना मत भूलिएगा। टिल देन, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट।